Hi everyone. Today with us we have Adarsh Gupta. Currently he's a software engineer at Google and he's the man who has cracked 7 giant tech companies. So naming those companies, one is Google, which he's currently working in. Then second is Uber, Sprinklr, Cred, ShareChat, Unacademy and Salesforce. मतलब 7 कंपनियां क्रैक किए हुए कोई बंदा आपके सामने बैठा है तो ऑब्वियसली he has a lot of more achievements. So he's master at Code Forces and 6 star at Code Chef. He has been participant in 7 hackathons, out of which he has won 5, and he has बहुत सारी achievements which I cannot even jot down. I'll write them all in the screen. And hi Adarsh, welcome to the channel and thank you so much for joining me. And please, can you introduce yourself to the audience? Hi Priyanka, thanks a lot for this great introduction. I'm not sure what else I can say, but yeah, I'll still give my introduction. So I'm Adarsh Gupta. I graduated from IIT BHU with computer science, and I've been doing computer programming since my college, and I was able to achieve master and code courses. I'm currently working as a software engineer at Google. Yeah, so that's majorly about me. तो आदर्श मेरा सबसे पहला सवाल कि अब हाउ डिड यू गेट इंटरेस्ट इन कोडिंग? लाइक बहुत सारे बच्चों को तो कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं आता है और अगर कोडिंग करने बैठे तो उनसे कुछ होता Right, नहीं है, तो इंटरेस्ट आया right, कैसे? right, right. So, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. तो ऐसा था, लाइक व्हेन आई जॉइंड 11th क्लास, मेरी 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस थी. तो कंप्यूटर साइंस मैंने कुछ लेक्चर्स किए क्लास में और मुझे लगा ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने सब्जेक्ट स्विच कर लिया. कंप्यूटर साइंस से मैंने बायो ले लिया, ठीक है. फिर बायो पढ़ने गया तो लगा यार बायो भी बस की बात नहीं है और बायो ज़्यादा बस की बात नहीं है. तो बहुत ऐसे सर दर्द हुआ. फिर सोचा चलो कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, किसी तरह पास हो जाएंगे. देन कंप्यूटर साइंस लिया. फिर धीरे-धीरे थोड़ा समझ में आने लगा. फिर धीरे-धीरे थोड़ा मज़ा आने लगा. तो फिर ऐसा होने लगा कि जब 11th क्लास में तो मेरे को लगा था भाई कंप्यूटर साइंस मेरे से बिल्कुल नहीं होगी. 12th क्लास में मेरे कंप्यूटर साइंस में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स थे, लाइक सारे टेस्ट में जब होते थे. और उसके बाद थोड़ा-सा इससे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ, कंप्यूटर साइंस मेरे को अच्छी लगने लगी है. फिर जब आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तब भी कंप्यूटर साइंस ही सब लोगों ने सजेस्ट किया और कंप्यूटर साइंस ही ली. इसे मतलब मेजर रीजन यही था कि सब लोगों ने सजेस्ट किया एंड थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आने लगा था क्लास 11th-12th में. देन जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो कॉलेज में हमारे लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सीपीजी ग्रुप, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ग्रुप. उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है एंड सीनियर्स ने ऐसा हाइप क्रिएट किया था कि उसमें एंट्री हो गई तो लाइफ सेट है, मतलब भाई जॉब लग जाएगी, सब हो जाएगा. तो ऐसा हाइप हाइप क्रिएट किया था. तो उसके बाद जब पता चला वो टेस्ट आने वाला है तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए, फिर टेस्ट वेस्ट दिया. फिर धीरे-धीरे ऐसे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ, चलो कुछ-कुछ इवेंट्स होने लगे. जैसे पहले ये इवेंट हुआ, फिर सीपीजी वाला इवेंट हुआ, फिर नेक्स्ट एक और कोई इवेंट होने लगा, फिर उसके बाद आईसीपीसी होने लगा. धीरे-धीरे ये चीज़ें खुद से होने लगी. फिर जब एक बार इंटरेस्ट बन गया, एक बार लोग रिस्पेक्ट करने लगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कारण थोड़ा-सा कि भाई चलो स्पेशलिस्ट ही बन गए. कॉलेज में कुछ ही स्पेशलिस्ट है तो थोड़ा रिस्पेक्ट करने लगे. तो वैसे फिर आगे इंटरेस्ट चलता रहा. बढ़िया. मतलब यू आर द गाय हु इज मास्टर इन एट कोड फोर्सेस एंड यू आर सेइंग कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था स्टार्टिंग में, तो लाइक ऑडियंस कैन लर्न अ हाँ, लॉट कि इट्स अबाउट पेशेंस एंड परसिस्टेंसी. राइट. मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग में लगेगा कि मज़ा नहीं आएगा, बट यू विल हैव लाइक दिस इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग जिसको तुम थोड़ा टाइम दोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड है. मतलब थोड़ा-सा मैथ्स बैकग्राउंड भी था मेरा, तो जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की तो प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा. स्टार्टिंग में हाँ, लगा कि यार ये नहीं होगा फिर से, क्योंकि भाई चीज़ें क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे थे. मेरे से कॉन्टेस्ट में 0 क्वेश्चन बने थे पहले कुछ कॉन्टेस्ट में. बट जब धीरे-धीरे थोड़ा टाइम दिया तो मज़ा आने लगा भी और लोगों से डिस्कस करने लगे कि प्रॉब्लम्स ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए. अच्छा लगने लगा. तो मतलब हाँ, थोड़ा टाइम दोगे तो चीज़ें आएँगी. यस, परफेक्टली, बिल्कुल. मतलब टाइम देना ही पड़ेगा तभी कोडिंग हो पाएगी, वरना ऐसे तो नहीं. ओके. राइट, जब राइट. यू स्टार्टेड कोडिंग तो इनिशियली कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो व्हाट वर दोज चैलेंजेस एंड कैसे हुँ, उनको पार किया? लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच टू हुँ. कोप अप विद दोज चैलेंजेस? सो लाइक मैं स्कूल वाले पार्ट को इग्नोर करूँगा. कॉलेज से स्टार्ट करते हैं जब मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली स्टार्ट की. तो पहली बार प्रॉब्लम खोला तो भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि कॉन्स्टेंट्स क्यों है भाई. मतलब कोड लिख दो, कुछ भी कोड लिख दो चल तो जाएगा ही ना, मतलब क्या दिक्कत है.
तो फिर समझ में आया कि अच्छा, जैसे एक कंप्यूटर में एक बार में इतने ही ऑपरेशंस हो सकते हैं 1 सेकंड में। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट लाइक जो प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि जब मैंने स्टार्ट किया कोडिंग करना, जब मैंने कॉन्टेस्ट दिया तो मेरे से एक भी प्रॉब्लम नहीं बना। 2 घंटे दिए, एक भी प्रॉब्लम नहीं बना। तो ये चीज़ें जब पता चली कि यार एक प्रॉब्लम बन नहीं रहा था, क्या हमारे बस की बात नहीं है, तो मैंने फिर सीनियर्स को कॉन्टैक्ट किया कि सीनियर्स ऐसा सीन हो रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा होता है, तुम प्रॉब्लम सॉल्व जितना करोगे उसके बाद तुमसे प्रॉब्लम्स बनने स्टार्ट शुरू होंगे कॉन्टेस्ट में। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि स्टार्ट विद हैकर रैंक। हैकर रैंक पे जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर कुछ टाइम बाद कोड फोर्सेस वगैरह पे आना। ठीक है, तो मैंने वही किया कि मैं हैकर रैंक पे गया, मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम्स किया, मैंने 60-70 प्रॉब्लम्स के आसपास सॉल्व किए। देन मैं कोड फोर्सेस पे आया, देन थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स बनने स्टार्ट हुए। एक स्टार्टिंग इनिशियल चैलेंज ये था। उसके बाद बीच बीच में कई बार कुछ चैलेंजेस आते थे कि लाइक रेटिंग बढ़ नहीं रही है, जैसे कि मान लो रेटिंग स्टैग्नेंट हो गई 1400 पे, 1600 पे, 1700 पे। तो उस टाइम पे मेजरली ऐसा होता था कि कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाने की कोशिश करते थे। मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ पर पूरा दिमाग लगा नहीं कर रहा हूँ कि भाई चलो पढ़ा, थोड़ी देर सोचा, नहीं समझ में आया, एडिटोरियल देख लिया। तो वो सब चीज़ें थोड़ी होती थी। तो उस मतलब टू गिव यू प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, लाइक करंटली आई गिव मेंटरशिप टू स्टूडेंट्स। सो जब बच्चे बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व मतलब रेटिंग नहीं बढ़ रही है या फिर कुछ ऐसा इशू आ रहा है, तो कितना टाइम देना है एक प्रॉब्लम पे? सो आई से 30 minutes, बट व्हाट आई मीन बाय दैट इज like 30 minutes में पूरा दिमाग लगाना। Like now when I like after some time, like first few months of solving problems, I solve all problems on pen and paper, like very properly on pen and paper। भाई नहीं, मेरे को जीरो आइडिया भी लग रहा है तब भी मैं रैंडम टेस्ट केसेस लिख के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इन सब चीज़ों से मेरा थोड़ा दिमाग खुलने लगा उन टॉपिक्स पे कि हाँ, कुछ कुछ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज होने लगे कि हाँ अच्छा ये पैटर्न्स भी होते हैं। तो इसकी हेल्प से प्लस मैं कॉन्टेस्ट में फिर अपसॉल्व काफ़ी ज़्यादा करने लगा कि मैंने ए बी सी प्रॉब्लम किया तो मैं डी और ई करूँगा, प्रॉपरली करूँगा, और एफ का एटलीस्ट एडिटोरियल पढ़ूंगा। तो मैं ऐसी चीज़ें करने लगा। फिर धीरे 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 मतलब रेटिंग बढ़ने लगी और चीज़ें होने लगी। ओह, बढ़िया। मतलब ऐसे दिस ये तो मैंने काफी लोगों से सुना है कि जैसे उनकी रेटिंग काफी स्टेगनेट हो जाती है, लाइक, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ट्राई नहीं करते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द गुड एडवाइसेस दैट पीपल कुड हियर फ्रॉम यू। ऑल्सो एक चीज़ जो मिस कर दी मैंने इसमें, जब आप अपने कंफर्ट जोन पे से निकल नहीं रहे हो, उसके दो रीजन है। कि तब जब अच्छे से दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जस्ट मतलब टाइम पास टाइप कर रहे हो, या फिर आप जिस लेवल पे आप हो उससे हार्डर प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर रहे हो। जैसे इफ यू आर एट 1600 रेटिंग, then solve a problem of 2000 rating or 1800 rating or 1900 rating. Don't solve problems of 1600. Let's say you are good in DP, then solve constructive problems, solve problems of string, solve problems of tree। जो भी तुम्हारा वीक टॉपिक है उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करो, लाइक तुम्हारा दिमाग खुलेगा उन टॉपिक्स पे, नए टॉपिक्स पे एड हॉक प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उन सबसे एक ट्राई टू कवर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स और harder problems in your current level, then like this will help you get out of your comfort zone। अभी जॉब के साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सही बैलेंस हो जाता है, लाइक टाइम मिल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? अभी नहीं करता मैं कॉम्पिटिटिव, अभी कभी कभार ऐसे टेस्ट मतलब कोई कॉन्टेस्ट हुआ तो कोई कॉन्टेस्ट दे दिया, बट हाँ ऐसे रेगुलरली तो नहीं करता। मतलब कॉलेज में ही रेगुलरली फाइनल ईयर में अच्छे से बंद हो गया था। कभी कभार कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, कोई स्पेशली कोई बड़ा कॉन्टेस्ट हो रहा है तो दे देते थे। लाइक फेसबुक हैकर कप हुआ तो दे दिया, या किक स्टार्ट होता था दे देते थे। बट हाँ मतलब अब तो प्रॉपर सीपी नहीं कर पाते हैं। Your team has achieved 14th rank in ACM ICPC Amritapuri on-site regional in 2020। तो Right. पहले तो ICPC में होता क्या है, कैसे क्या होता है, and how did your team achieve 14th rank? So ICPC is like the biggest team event in competitive programming, and it's like a big deal। लाइक अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का रेज्यूमे देखोगे तो उसमें आईसीपीसी लिखा होगा। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा होता है कि इसमें पहला एक होता है ऑनलाइन राउंड, आईसीपीसी का ऑनलाइन राउंड। सो इन दिस राउंड यू हैव टू फॉर्म अ टीम ऑफ 3 people, एग्जैक्टली 3 people, एंड एक कॉन्टेस्ट होता है जो कि मतलब जैसे 3-4 घंटे कॉन्टेस्ट होगा, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं याद, बट और उसमें तुम्हें सेम फॉर्मेट में प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। लाइक एक कॉन्टेस्ट के फॉर्मेट में प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने, कम से कम टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं,
कम से कम गलतियों में प्रॉब्लम सॉल्व करने। और इसके बाद लाइक जो कुछ क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे टीम सेलेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल हर कॉलेज से फर्स्ट टीम सेलेक्ट होती है एंड उसके बाद लाइक टॉप 150 टीम्स अलग से सेलेक्ट होती है। ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, इसके बेसिस पे टीम सेलेक्ट होती है। तो इसके बाद रीजनल्स राउंड होते हैं। रीजनल्स राउंड में लाइक ऑल द टीम्स हु आर सेलेक्टेड will represent their colleges in regional round. Like this is also sort of college क्या कहते हैं कॉलेज रिप्रेजेंटेशन टाइप की, भाई कॉलेज से 2 टीम है, एक टीम जा रही है रिप्रेजेंट करने आगे, तो फिर वहाँ पे जाके कॉन्टेस्ट होता है, वहाँ पे गिव कॉन्टेस्ट एंड इन दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑनलाइन दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। बट या ये होता है इसमें द मेजर डिफरेंस बिटवीन ICPC एंड अ नॉर्मल कॉन्टेस्ट इज दिस, इट इज अ टीम कॉन्टेस्ट। So team contest is way different than a normal contest because you can be a great coder, but अगर you are not, तुम्हारी टीम में केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो तुम प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। मतलब इट्स पॉसिबल दैट एक एक स्पेशलिस्ट की टीम एक एक्सपर्ट की टीम को बीट कर रही है, एक एक्सपर्ट की टीम एक कैंडिडेट मास्टर की टीम को बीट कर रही है, एक कैंडिडेट मास्टर की टीम एक मास्टर की टीम को बीट कर रही है। लाइक इसके तुम अगर लीडरशिप बोर्ड पे जाके देखोगे तो बहुत एग्जांपल्स देखोगे, बहुत ज़्यादा, कि लाइक individually not so good coders are beating like a team of good coders. So like what's the major thing is this in this is you, when you are forming a team for ICPC, you need to form a team of those like programmers like इनके साथ तुम्हारी केमिस्ट्री बढ़िया है, इनके साथ तुम चीज़ें एक्सप्लेन आराम से कर सकते हो, एंड इन जनरल भी the comfort level बहुत अच्छा है। This is one. Okay. And hackathons में you have participated in 7 and won 5 of them. तो हैकेथॉन्स में तो बहुत Right. टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उसके अंदर ही पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करके प्रोजेक्ट वगैरह या प्रोटोटाइप वगैरह बनाना होता है। तो हैकेथॉन्स के बारे में हाउ वुड यू गाइड द स्टूडेंट्स? So hackathons is a very different format. So in hackathons, what happens is like you are given a problem statement. Let's say that statement is solve something in healthcare using AI. So let's say this is the problem statement, or there are categories. But let's say this is the problem statement, and now what you need to do is within 24 hours or 48 hours, whatever the time of hackathon is, you need to build something, build a prototype, and present that. And based on some criteria like your tech, your presentation, like these two are the most important things. And third is impact. In तीनों के basis पे like you are sort of ranked, judged, and like in तीनों के basis पे like you get the, you basically win or lose. That's what happens. Now hackathons में ऐसा होता है कि it's only 24 hours, 48 hours. That's very less time. You can't build everything in 24-48 hours. So अब चीज़ें होती है कि एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसमें बैक एंड चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, और एक प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए। सो यू हैव like all, you have a list of things that you want in your teammates. For example, someone should know back end, someone should know front end, someone should know, let's say, design, and someone should know presentation, someone should know AI. Like इस टीम के लिए बता रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने दिया कि बिल्ड समथिंग इन हेल्थ केयर यूजिंग AI, तो ये सब, ये पूरा स्टैक तुम्हें चाहिए। नाउ यू फाइंड अ टीम। जैसे तुम्हारे कॉलेज में कुछ लोग हैं तो तुम उनके साथ टीम बना लो। अदरवाइज यूजुअली हैकेथॉन्स में ऐसा होता है कि फाइंड अ टीम करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें तुम टीममेट्स फाइंड कर सकते हो। तुम बताते हो कि मुझे ये चीज़ आती है और मैं इस टाइप की टीम ढूंढ रहा हूँ। Then like you form a team and then you start building. So start building, first you decide exactly what are you going to build, then you decide some milestones, because ऐसा होगा कि तुम स्टार्टिंग में सोचोगे तुम 1000 चीज़ करोगे, बट तुम्हारे पास बस 48 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, you will hardly be able to do even 10%, 20%, 30% of that. So decide थोड़ा सा mindfully कि तुम क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, and focus more on presentation than tech. This is something that I not like a lot, but this happens. So presentation matters much more than tech. So I'll say ki have a very good front end. Even if you don't have a great back end, have a very good front end. Let's say if you're integrating something with AI, have something in AI. Like उसके सिवा जब तुम presentation वाला part करने जाओगे, तो that's like, let's say you are creating a video demo or you are creating a slide,
That is the most important part of this whole thing. You need to show impact, you need to show tech, you need to show everything in that like 5 minutes of slides or 5 minutes of video demo that you're going to present. So plan that accordingly. Give that huge amount of, let's say, dedicate in that 24 hours, 3 hours to this part of, let's say, even if you like are not able to build everything, just mention the design that you are going to add this in the future scope and those things. Like इन चीजों के साथ basically you focus on first 12 hours on building as much as possible, then you know कि तुम्हारी क्या like hackathon T0 पे start हुआ तो T12 तक 24 hours का hackathon है, hackathon T0 पे start हुआ तो T12 तक build whatever you can, then you know कि तुम्हारे लिमिट्स क्या है. तुम्हें लग रहा तुम 1000 चीजें करने वाले हो पर 2 चीजें हुई है, अब तुम्हें पता है तुम्हारे लिमिट्स क्या है. नाउ फोकस की तुम क्या कहते हैं T18 तक क्या क्या बना सकते हो, ठीक है. देन तुम T18 तक आधा घंटा प्लान करोगे ये चीजें हम अपने प्रोडक्ट में रखने वाले हैं, देन वो चीजें बनाओ T18 तक. उसके बाद तुम्हें 2 घंटे तुम्हें बफर मिलेंगे, उसके बाद तुम 3 घंटे प्रेजेंटेशन पे काम करना. इट्स लाइक दिस. तुम मतलब ट्राई टू फॉलो दिस फ्रेमवर्क. इसके सिवा कुछ कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, तुम्हें लगता हो कि यार ये आइडिया यूनिक नहीं है, ये आइडिया ये नहीं है, ये आइडिया वो नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं है. लाइक try to get ideas from existing projects. Like there are hundred of thousand of projects that you will go to if you go to devpost.com or like websites like these, then you will find many projects which you can just get the inspiration from, and you can start working on those projects instead of focusing कि यार मेरा idea बहुत unique होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. Like no idea is unique, every idea is an inspiration from some other idea. This is I'll say, and focus on presentation. ये एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे कॉलेज के सीनियर बैठ के मुझे समझा रहा है अभी कि कल हैकाथॉन है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है एंड ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है, ये करना है वो. तो इट वाज वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. ओके, तो now coming to the main question, you have cracked 7 companies and you are working in Google, which in itself is बहुत बड़ी accomplishment, क्योंकि Google is dream of many people out there. तो 7 कंपनीज क्रैक करने का राज क्या है? लाइक रेज्यूमे, डीएसए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, या फिर इंटरव्यू में समथिंग एल्स, मतलब प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, व्हाट इज द मेजर पार्ट? और 7 कंपनीज क्रैक कोई कैसे कर सकता है? लाइक कैसे? Right. So it's more like, okay, so let me tell you what happens, or like what is required to crack a company. Okay, so it's like first you'll have to give coding test, then you'll have to give interviews. In interviews you'll have one HR round, like depending on the company, but you'll have HR rounds and DSA round and maybe project round. Okay, so like each of these are important, but you need to like strategically prepare for the interview. So my first part, that is the coding test, that was prepared, like that is the most important thing. Reason being, if you are preparing for coding test, let's say you are doing competitive programming, or let's say you are doing DSA, then you are focusing on 2 parts of interviews, like two part of this whole process, that is DSA interviews and coding test. So like the main thing I'm suggesting, the main thing that helped me in this is like competitive programming. Like since I did competitive programming, most of the coding tests or interviews was not difficult for me. Now what happened is, like when I gave my first interview, I was confident before my first interview. Like I was good in competitive programming, I'll crack that company. I was confident in that. My first interview was in ByteDance. That's a parent company of TikTok. Okay, so like at that point of time, I would have said that if I would have cracked that I was a TikToker, but yeah, let's ignore that. So what I'm saying is, I was good at competitive programming. I cleared the coding test and I was confident. Then I went to the interview and I failed miserably. It's not that I was not able to solve the problem, it was communication skills. Like I went there and there was like a foreigner was there was accent problems, and mostly I've solved problems, not like
explain problems to people. So there was this communication gap, that was like communication skill issue that I was having. So what I did was, like, my first part of preparation is, that is, coding test and DSA problem solving, that I have done. Now the second problem that I am facing is currently communication. Then to improve communication, what I did was, I started explaining problems to people very patiently, very clearly. I also joined an academy mentorship to explain problems to students. I also joined student counseling services. Like, there's a in our college there is something called student counseling services, and I became an academic mentor. I taught some topics to first year students, and like, I did few things like this. All, like, initially it was for like learning to explain, but also like late after some point of time I started enjoying these mentoring students, teaching students. Yeah, leaving that part, I strategically focused on this communication skills, and then when I again gave the interviews, I cracked all the interviews. I cracked like all these companies that you mentioned. So I'll explain more things about this. So after I cleared DSA, after I was good in communication skills, I saw that what all things are required for interviews. So other things required were operating systems, databases, computer networks, and all these stuff. So I also read about these stuff. Like I read operating systems from something called Yellow Pages, databases from many different sources available. One of the great quotes available is of Hussein Nasser. There is a person called Hussein Nasser, and he has a very great course on databases. I read those things, and it's not just that I read those things. I built some good projects based on these things. So like I have replicated. So if someone knows about databases, I have replicated ACID properties, problems that we face. For example, dirty read problem. So all these problems I've replicated myself in my code and try to resolve them. And in interviews, I used to mention this, that this is the possible problem, and this is the thing that we can do to solve those things. So interviewers were also impressed that you know these problems, you have replicated these problems. It's not just theoretical knowledge. So strategically, the second part of the interview was also being cleared. That is the CS fundamentals. That is operating system, OOPS, and databases. So there is this thing that I used to do. Like, I'm very interested in databases. So in my introduction to the interviewer, I used to say like a few things about databases. Let's say if I'm giving introduction to an interviewer, I'll say like, I'm Adarsh Gupta. I've done complex programming in my college. I've become this is my achievement. Then I'll say, apart from this, I've built some projects around in backend development in AI. I've read in deep in backend development. I read many different blogs. Example, why Uber switched between Postgres and MySQL, and I mentioned few of these things. So interviewer also asked questions to me related to databases only. So that's a very plus point for me, because I have sort of specialization, not specialization or anything, but yeah, I have some knowledge of databases, and therefore, like, this sort of helps me in aligning or giving the direction to the interview on my strong parts only. And then after that, like, I've prepared for HR rounds also very properly. For example, uh, let's say if I'm having an interview of company X, what I'll do is I'll read about those companies. I'll read some very short tech blogs of that company. I'll read the history about that company, and I'll mention all those details in answer in my HR round. For example, let's say if someone says why you want to be hired in this company, so I'll say I want to hire because this is doing, let's say, great tech. For example, and I'll give examples. Let's say I read this blog in which they mentioned this from this, and it's like, if they're doing this level of engineering, then it's a good company for me to work in to grow as an engineer. This is just an example. That do your history, prepare yourself very well for the interview, prepare HR questions, prepare intro, prepare the mid, and let's say when you're making a resume, like, before applying with a resume to any company, keep your resume like full proof. When I say full proof, whenever you mention anything in resume, be prepared to be asked anything about it. Let's say if you're mentioning Django, that you have worked on Django, then be ready to be asked question about this. If you have mentioned Spring Boot, if you have
I mentioned Python, if you mentioned JavaScript, be ready to be asked questions related to this. Like, I've built all of my projects myself. So even though I'm mentioning that I've did all this for preparation, but in general, I have very huge interest in tech. I've built very good, let's say, computer networks project. So when I mention those projects to my interviewers, they ask me questions like why you did this thing this way. So when I explain why I did things this way, they are also very, uh, they are also they get this idea that this person have built this project himself. So when I say this is this was not strategic or anything, but I have few projects which shows my tech. Like I'm good in tech. I have one project like I've built an app and that is 100,000 plus downloads on Play Store, and yeah, so that also shows that apart more skills just than that sort of tech part, more skills than tech part. Yeah. So these are the things that you need to focus on. You need to focus on, let's say, if you're writing something on resume, be prepared for it. Don't write anything false. Don't write anything false. And if you're writing something, be well prepared for it. There is something called STAR. So read about that, about a STAR, and prepare every possible answer that is present on a resume using that STAR. And all this looks like a lot of things, but this whole thing will not require more than, let's say, 15-20 days to prepare. You will have every answer prepared, every possible answer prepared. You will be ready for everything for the interviews, and you will be able to clear interviews with the help of all of these. You told that you were weak at communication skills, and now today you are explaining each and everything to very large audience. So you have come very far way. So kudos to you. Adarsh, if you were now a first year student, yeah, if you were Right, in your second year or something, and you were to begin the DSA journey and all this competitive programming right, journey and companies के लिए preparation start करनी है, right, तो how would you right. go in your past and start this journey? So I'll say the first thing is get a mentor in your college. Like go to a senior who is good in your field in whichever you want to improve. Let's say in computer programming, get asked him that you are very serious about this and you want to do this. Then prepare your plan and just share it with him that I'm going to do this, and he will also guide you and stuff. But we'll talk later about the mental part. But yeah, first I'll say just start. Let's say start on HackerRank, solve few problems, then go to there's something called A2OJ ladder. So what is a ladder is sort of a list of problems sorted in increasing order of difficulty, and there are different level of difficulties. You can choose your level, and then you can start solving problems on like that side, something called A2OJ ladder. And like after that, I think you should start giving contests as soon as possible. Let's say after 1 month or 1.5 months of starting DSA or competitive programming, start giving contests, start giving as many contests possible. Give code share, code forces, add coder, lead code, cheeks or geeks, everything. Start giving everything. And along with this, code with someone. Don't code alone. It's get sometimes very boring. Code with someone. Let's say after a contest, discuss with someone. So what I used to do is after every contest, we used to go for dinner in our hostel only, and we used to discuss problems. It used to be a very good practice in terms of, let's say, you're not just understanding your approach of thinking or approaching a problem. You are also understanding approach of hundred of other people. So apart from this, I'll say don't get demotivated if your ratings are not increasing. If your rating is like this, after if you are consistent, it will suddenly go up. So those are the major things. Also, after some time, uh, when I say get a coding partner or a mentor, both of them should be those people who are very honest with you, even if related to this especially. It's fine if they are mean, and they should be mean regarding these things. Like what happens is many times you are
just like beating around the bush, you're not doing things properly, you're just passing the time. If you have those kind of people with you, then they will tell you that you are doing something wrong, and you will also realize that like, you're doing something wrong. But when someone says something like this, then you also think of start taking some actions. Someone else is also accountable for you. Do things like this and prepare strategically, even for competitive programming. Have a goal in your mind. Have a goal like I'm going to do good in next contest, next big contest, that is, let's say, ACM ICPC that's coming next year, or let's say whatever competition is going to happen. Like, have a goal in your mind so that you can prepare, like, sort of uh, have something to look forward to, not just doing competitive programming. Perfect way. Okay. Others, a question out of the box. You have cracked 7 companies in the past. So what are your future goals? ऐसे ही आ गया question. So, like, there are many things. So, the first thing is I want to increase my core tech knowledge. So, basically, for example, you read more about databases, just now distributed databases, networks, operating systems, Java, and maybe also write some blogs about this. Apart from this, I'm also planning to start a YouTube channel. So I always wanted to start a YouTube channel from, let's say, my second, third year, but there was this fear of rejection, the major element because of which I didn't start it till now. But yeah, now I'll start. It's fine. We'll see. It will be related to tech, mostly some interesting stuff that I've done. That I'll also mention those. For example, like I have a very good typing speed, so I'll post a video about like how to increase your typing speed. Like I can type at around 100 plus words per minute very easily. And I'll also mention few things like how to track location of your college mates. I'll post This videos is like I this need. also. But This is all these, I need this before everyone. but this will be only for educational purposes. And I'll also share videos like how to use OpenAI for free and stuff like these. And I'll let's say this is just like a plan on top of my mind that I want to do. Yeah, that's all. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं. तो आई एम तो वेरी ईगर एंड आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. तो एवरीबडी कैन Right, right, गो right. चेक आउट एंड सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं. एंड उससे पहले मैं खुद ही सीख लूंगी कि करते कैसे है. दैट ट्रैकिंग लोकेशन वाला वाज वेरी गुड. आदर्श, जैसे वी हैड अ कॉन्वर्सेशन तो यू वर मेंशनिंग कि कभी भी अकेले कोडिंग नहीं करनी चाहिए एंड यू वर एम्फसाइजिंग अ लॉट ऑन दिस. तो मतलब ऐसा क्यों? मतलब अकेले कोडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? So ऐसे है कि like there are many factors to it, but एक एग्जांपल दूं तो जैसे अगर मैं रनिंग करने जाता हूँ या कोई रनिंग करने जाता है तो अकेले रनिंग करना बहुत मुश्किल है. बट अगर भीड़ मतलब जो मैराथन टाइप हो रही होती है तो लोग उसमें दौड़ जाते हैं. अकेले नहीं कर पाएंगे पर दौड़ जाएंगे. तो when you are participating in a contest with more like or like doing something together, then you have much more motivations to do things. You will think like यार उसने ये contest दिया, मेरा आज मिस हो गया, मेरे को मैं next contest दूंगा. ये सारी छोटी मोटी चीजें रहती हैं. बट इसके सिवा तुम्हारा मोरल काफी अच्छा रहता है when you give contest and like discuss problems when you don't code alone basically. And ऐसी चीज होती है कि I don't know how to explain this. So एक फैक्टर जो मैंने पहले बताया था कि you get to know approach of other people also, how they think, how they like what's their algorithm to solve a problem. So बट हाँ, इसके सिवा एक स्टोरी बताता हूँ कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब मैं अराउंड एक्सपर्ट के आसपास था. तो मैंने मतलब एक ऑनलाइन कम्युनिटी थी, जब छोटा सा ग्रुप था उसमें 50-60 लोग ही थे, उसको ज्वाइन किया था. तो उसमें कोई हम में से कोई ऐसे बहुत अच्छा कोडर नहीं था, बट सब मेहनत बहुत कर रहे थे. सो दैट वाज अ वेरी गुड कम्युनिटी आई जॉइंड इन. आई एक्सप्लेन व्हाई. सो ऑल ऑफ अस डिड कोडिंग जब कोविड स्टार्ट हुआ वेरी रिलीजियसली फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो अचानक से ऐसा हुआ कोई कैंडिडेट मास्टर बना, एक बंदा कैंडिडेट मास्टर बना.
फिर दूसरा बंदा भी कैंडिडेट मास्टर बना, फिर धीरे-धीरे आई थिंक आवर ग्रुप वी हैड अराउंड 10 कैंडिडेट मास्टर, मैं भी ऐसे ही कैंडिडेट इसी बीच में कैंडिडेट मास्टर बना था। एंड एक टाइम पे ऐसा भी था कि जब टेस्टिंग चल रही थी, मेरी कोड फोर्सेस पे रैंक 1 चल रही थी। तो मतलब ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते थे कि जब टेस्टिंग स्टार्ट हुई तो और आदर्श कोड फोर्सेस रैंक 1 चल रही है तेरी वगैरह-वगैरह एंड स्टफ। बट ऑल दीज़ यूज्ड टू गिव मोटिवेशन एंड स्टफ। एंड उसके बाद क्या हुआ जब कैंडिडेट मास्टर वाला फेज़ पूरा हुआ, तो एक बंदा मास्टर बना। आई थिंक सेकंड मास्टर वाज़ मी ओनली, मैं भी मास्टर बना। अच्छा आई थिंक 2 या 3 लोग और मास्टर बने थे। So you see, like if you find a good community to participate in, to be with, especially a good coding community, then you have a huge motivation or some sort of inspiration or something that you have, and you need to, like, that helps you a lot even if you don't know, even if you don't realize. Yes, मतलब ये मोटिवेशन तो काफी मिलती है when peer group supports a lot. Hmm. तो Right. this is a good factor. Thank you so much, Adarsh, for joining me today. In spite of achieving so much in life, you are such a humble and down to earth person. Like, uh, I am immensely grateful कि I got a chance to talk to you, hear your journey, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. Like, I love talking to people, but this is one of my favorite talks. Thanks a lot, Priyanka. Behind the scenes में मैंने भी तुमसे काफ़ी चीज़ें सीखी है, especially thanks a lot for motivating me, giving me confidence to start a YouTube channel, and like thanks a lot for a lot of things.